नमस्कार, स्वागत है अहाँ सबके जीडीटी एजुकेशन में। अहाँ सब मैथिली पदखंड में अध्याय 3 तक पढ़ि लेलहुँ। आओ आइ हम अध्याय 4 लऽ कऽ आयल छी, जेकर शीर्षक अछि हाँ आ भेल वर्षा। हिनकर जे राइटर छल हुनकर परिचय अहाँ सब जानि लेलहुँ। वैद्यनाथ मिश्र जी जे हिनकर रचना केने छथि, परिचय अहाँ सब पिछला वीडियो में समझि गेलहुँ। आओ आब एहि चैप्टर के समझू कि कवि महोदय एहि कविता में की कहि रहल अछि। अहाँ के पाठ अछि, शीर्षक अछि हाँ आ भेल वर्षा। एमे कहि रहल छथि जे प्रतीक्षा में बीत गेल कईएक पहर, प्रतीक्षा में चुइल गत्र गत्र सँ हम। ओहो में केना घैलक भेल, यानी सब किसान सब बरसात के प्रतीक्षा में अछि। सब सोचैत अछि कि कखन बरसात होइत, कखन पानि पड़त। हाँ, जेकर प्रतीक्षा में सबके गत्र गत्र से एकदम घैलक घैलक हम की भऽ गेल, चुइब गेल। आगाँ कहि रहल छथिन कि प्रतीक्षा में ठमकल रहले गाछ पातक, गाछक पात पात। देखियो पानि जे नहि पड़ैत अछि तऽ पत्तो सब जेना बुझाइत अछि की भऽ गेल, ठमकि गेल अछि। सिहकी नहि चललै बसातक, बसातक मतलब की भऽ गेल, हवा। यानी हवा के सिहकी, एको रत्ती सिहकी नहीं चलल। आ प्रतीक्षा में सूर्य रहि गेल झाँपल, नहीं जानी कते काल मेघक और में। एहि दुआरे कियाकि अहाँ सब देखैत हेबै कि जखन पानी पड़े वाला रहैत अछि तखन की भऽ जाइत अछि, आकाश में, यानी सौंसे आकाश में बादल से की भऽ जाइत अछि, छपा जाइत अछि। तऽ बादल जखने लग जायत तऽ सूर्य भगवान की भऽ जाइत अछि, छपा जाइत अछि। ताहि दुआरे कवि महोदय जी कहि रहल अछि कि प्रतीक्षा में नहीं जानी सूर्य रहि गेल छापल, नहीं जानी कते काल मेघक और में। यानी सूर्यो भगवान मेघक और में जेना की भऽ गेल, नुका गेल। समझ गेलहुँ कि पहले तो हुनक घाम घैलक घैल चुबैत अछि, फेर गाछ पात के, हाँ गाछक पत्ता पत्ता सेहो रुकि जाइत अछि, सिहकी नहीं एको रत्ती हवा के सिहकी नहीं बहैत अछि। आब कहैत अछि सूर्य भगवान सेहो झाँपल रहि गेल। फिर आगाँ ओ कहि रहल छथिन कि प्रतीक्षा में सुनलक बड्ड गैर अखाड़क ई मास, आ हाँ आ भेल वर्षा। कि देखियो अखाड़क मास जखने गैर, मतलब किसान सबके प्रतीक्षा कहैत अछि ना कि इंतजार करैत करैत एकदम सब्र ओकर टूटि जाइत अछि। तऽ ओ कि कोनो बेर एना भऽ जाइत अछि कि गुस्सा में लोग ने गारि पढ़ऽ लागैत अछि। तऽ अखाड़ मास के जखने गारि दैत अछि आ तखने ताहिके बाद बरसात हुअ लागैत अछि। ताहि दुआरे कवि महोदय जी कहि रहल अछि कि प्रतीक्षा में सुनलक बड्ड गारि अखाड़क ई मास, यानी गारि सुनलाक बाद बारिश होबऽ लागैत अछि, पानि पड़ऽ लागैत अछि। कहैत अछि हाँ आब भीजल संसार, हाँ आब हल्लुक भेल मन, हाँ आब उगला सूर्य। आब संसार भीज गेल, मन हल्लुक भऽ गेल आ सूर्य भगवान सेहो उगि गेल। कियाकि जतेक बादल छल आकाश में एकदम झाँपल छल, यानी फैलल छल, पसरल छल, जखने पानि पड़ैत अछि तऽ बादल खत्म भऽ जाइत अछि, एकदम आकाश साफ, एकदम वातावरण साफ। आ जखने बादल हटि जाइत अछि तऽ सूर्य देवता तुरंत अपन किरण लऽ कऽ, रोशनी लऽ कऽ हाजिर। तऽ कहि रहल अछि कवि महोदय कि जखने पानि पड़ल, जखने भीजल संसार, तखने मन तऽ हल्लुक भइए गेल आ सूर्य देवता सेहो उगि गेल। कहैत अछि हाँ आब देखबा में आयल चिड़ै चुनमुन, यानी देखैत जे चिड़ै चुनमुन सब जेना नुकायल रहैत अछि सेहो उड़ऽ लागैत अछि। कहैत अछि कि बीज होयत अंकुर, नैना भिराम, प्रतीक्षा में सुफल भेटतैक ओकरा। यानी बीज जे ओहिमे बुनत, यानी छिटत, कियाकि पहले बीज के बुनल जाइत अछि, फिर बीज के बुनला के बाद कनि दिन के बाद छोट छोट पौधा रूप में ओ तैयार भऽ जाइत अछि। ताहिके बाद यानी ओहि धानक जे पौधा होइत अछि ओकरा खेत में की करल जाइत अछि, रोपल जाइत अछि। तऽ ताहि दुआरे कवि महोदय जी एहि कविता के माध्यम से कहि रहल अछि एहि पंक्ति में कि हाँ आब देखबा में आयल चिड़ै चुनमुन, बीज होयत अंकुर, अंकुरित भऽ जायत, नैना भिराम जे मनोहर होइत। आ कहैत अछि कि प्रतीक्षा में सुफल भेटतैक, एतेक जे प्रतीक्षा करैत अछि तऽ ओकर तऽ सुफल, यानी ओकर तऽ सफलता भेटबे करत ने। तऽ तैं कहि रहल अछि कि प्रतीक्षा में सुफल भेटतैक ओकरा, बाद बुन होयत हरियर, आ जुड़ा जेतनि धरतीक मोन प्राण। तब ई नहीं सोचियो कि खेती बाड़ी होइत अछि तऽ खाली किसान हमरा सबके खुशी मिलैत अछि, सबसे बड़का खुशी तऽ धरतियो माता के मिलैत अछि। कियाकि ओ बंजर रहैत अछि तऽ कतौ न कतौ धरती माता सेहो उदास रहैत अछि, कनैत रहैत अछि। आ जखने ओहिपर हमसब मेहनत करैत छी, फसल उपजाबैत छी, तऽ ओहो खुशी से एकदम आनंदित होइत रहैत अछि। यानी हुनकरो मोन प्राण जुड़ा जाइत अछि, कियाकि ओ सगरो हरियर भऽ जाइत अछि, हरा भरा भऽ जाइत अछि।
आ जते धरती पर अहाँ सब हम सब जतेक मेहनत करै छी, जतेक कर्म करै छी, जतेक खेती बाड़ी हैत तऽ अपना सबके घरमे ओतेक खुशहाली की भऽ जायत, दुगना आबैत अछि। कियाकि मेहनत करबै तखने ओकर फल मिलत। आ जतेक किसान सब खेती बाड़ी करबै ओतेक अन्न उपजत, आ अन्न उपजत तखने सबके पेट तक। आ कितनो अहाँ मानि लिअ कतनो कुछो कऽ रहल छी, जब तक पेटमे एकोटा अन्नके दाना नहि रहत कोनो काम करैमे मन नहि लगैत अछि। सबसँ जरूरी अछि अन्न, यानी सबसँ जरूरी अछि पेट भरना। आ ओ पेट के भरैत अछि? किसान सब। के भरैत अछि? किसान सब। तऽ तैँ कहि रहल अछि कि धरतियो के मोन प्राण भरा जाइत अछि। आका कहि रहल अछि कि ओढ़ि लेत कदम गाछ पियर फुदना वाला झालर। अब एतऽ देखियौ, पियर फुदना वाला झालर से तात्पर्य भऽ गेल कि देखैत हेबै बरसात महीनामे बरसात भेलाके बाद कदम गाछमे जे पियर पियर फूल होइत अछि, सौंसे कदम गाछमे पियर पियर फूल फुला जाइत अछि। आ जेना लागत, अहाँ ध्यान से देखबै तऽ जेना लागत कि कोनो झालर जेना ओहि गाछके की कऽ देने अछि, झाँपि देने अछि। तैँ कवि महोदय जी कहि रहल अछि कि पियर फुदना वाला झालर कदम गाछ की करत? ओढ़ि लेत। आगाँ कहि रहल अछि ठीक ठाक करत भगता सलहेसक गहबर के। आ अपना सबके गाममे देखैत हेबै कि सबके गाममे एगो डिहबार बाबा, ब्रह्म बाबा होइत अछि, जे पूरा गामके एना मानल जाइत अछि कि पूरा गामके ओ की करैत अछि? रक्षा करैत अछि। तऽ सब लोग जखने कोनो खुशी होइत अछि तऽ लोग पहिले गह्वरमे जाके लोग पूजा करैत अछि। तऽ ताहि दुआरे कहि रहल अछि कि लोग खुश भऽ जाइत अछि कि आब तऽ प्रतीक्षाके परिणाम अच्छे होइत। जखने पानि पड़ैत अछि तऽ लोक सब खुशीके मारे जे करैत अछि से तऽ करबे करैत अछि। सबसँ पहिने पहुँचैत अछि सलहेसक गह्वरमे। कथी लए? दूबिके छिलै छालै लेल, यानी ओतऽ जे घास फूस जे कचरा लगल रहैत अछि तकरा की करैत अछि? साफ करैत अछि। किया? कि ओतऽ पूजा पाठ करब, कियाकि भगवान कृपा केलनि। हमर की कर्तव्य अछि कि हमहूँ भगवानके खुश करी। भगवान हमरा खुश करैत अछि तऽ हमरो फर्ज अछि कि हमहूँ भगवानके खुश करी। तऽ हम तऽ हुनका कुछो नहि दैत छी। पूजा पाठ भक्ति आराधनासँ हमरा एना बुझाइत अछि कि भगवान खुश भऽ जायत। तऽ ताहि दुआरे लोक की करैत अछि, यानी किसान सब सलहेसक गह्वर लग जाके आ ओकर दूबिके की करैत अछि? छील छालि कऽ साफ करैत अछि। तऽ तैँ कवि कहि रहल छथिन कि साफ कऽ देतनि आइन आ भरि जाइत पोखरि, भरि जाइत पोखरि भऽ जायत उमरान। यानी पानि पड़त तऽ पोखरिओ भरि जायत, एकदम फूल भऽ जायत, उमरान भऽ जायत। आ पसरते ओहिमे ललका कुमुदनीक पात। आ ललका ललका कुमुदनीके पात पसरऽ लागैत अछि। जखने पोखरि भरैत अछि तऽ देखैत हेबै ललका ललका एगो पत्ता होइत अछि कुमुदनीके, ओ ओहिमे पसरऽ लागैत अछि। भरि भरि दिन भीजत लोक, भरि भरि दिन धान रोपत लोक, आड़ि पर बैसि कऽ मझनी खायत लोक। तब अहाँ सब आड़ि पर बैसि कऽ मझनी खेने छी? हाँ, जे गाँवके बच्चा होबै हुनका तऽ जरूर पता हैत कि मझनी अहाँ सब देखैत हेबै कि खेतमे धन रोपनी होइत अछि तऽ अपना एहिठाम यानी जन खातिर रोटी जलखैके लोक बनैत अछि, ओतऽ पहुँचैत अछि आ ओकरा सङ्गे खाइमे एतेक आनन्द अबैत अछि कि की कहू। दूर दूर तक ओहि नून मिरचा अचारके सुगन्ध दूर दूर तक जाइत अछि। आ ओ सुगन्धसँ जेना मन ललचा जाइत अछि। मन कर, यानी घरमे कतनो नीक नीक चीज अछि तऽ ओ सुगन्धसँ बर्दाश्त नहि होइत अछि। कतनो खा कऽ अहाँ खेत जेबै तऽ मन करत कि ओकरा सबके सङ्ग बैठिके की करी, खाउ। आ हमहूँ सब खेने छी, कियाकि ओ आनन्द कुछ अलगे प्रकारके आनन्द होइत अछि। हमसब किसानक बाल बच्चा छी। हमरा सबके पूर्वज, यानी कतनो एडवांस जमाना आबि गेल, कितनो मॉडर्न युग आबि गेल, लेकिन हमरा सबके पूर्वज किसाने छल आ किसाने अछि। आब लोग भले ही नौकरी चाकरीमे लागि गेल अछि, बिजनेस व्यापारमे, मुदा हमरा सबके जे पूर्वज अछि सब किसाने छल आ किसाने अछि। तऽ एहिमे कोनो शर्मवला बात नहि कि हम किसानक संतान। हमरा तऽ गर्व होइत अछि जे हम किसानक संतान छी। तऽ कहि रहल अछि कि भरि भरि दिन लोक धान रोपैत अछि आ आड़ि पे बैसिके वएह मझली खाइत अछि, जलखै खाइत अछि, कलो खाइत अछि, बड़ा आनन्दसँ खाइत अछि आ फेर पुनः अपना अपना काममे लागि जाइत अछि। तऽ कहि रहल अछि कि पसरते ओहिमे ललका कुमुदनीक पात, भरि भरि दिन भीजत लोक, भरि भरि दिन धान रोपत लोक आ आड़ि पर बैसिके की खाइत? मझली खायत लोक। आ आशाक मचकी पर झूलत लोक, कल्पनाक स्वर्गमे बुलत लोक। यानी सब किसान कल्पना करऽ लागैत अछि कि एतेक मेहनत केलहुँ, एतेक प्रतीक्षा केलहुँ, आब तऽ फसल एतेक बढ़िआँ होइत। आ जखने फसल बढ़िआँ होइत यानी अन्न उपजत तऽ धन घरमे तऽ अयबे करत। पहिले अन्न तब धन, यानी जखने अन्न उपजत तऽ सब तक अन्न की होइत अछि? पहुँचैत अछि।
आ जखने हम अन्न उपजाबै छी तऽ किसान सबके तऽ अन्ने से यानी एक साल मानि लिअ कि ओ 6 महीना मेहनत करै छथिन तऽ फेर ओ बैठो के खाइ छथिन, लेकिन मेहनत हुनका बहुत काफी यानी बहुत ज्यादा करऽ पड़ैत अछि, काफी मेहनत करऽ। तो अन्न उपजा के ओ यानी अपना खातिर राखि लैत अछि, आ जे बचि जाइत अछि तऽ ओकरा दोसर के उपयोग लेल छोड़ि दैत अछि, यानी ओ बेचैत अछि या जे करैत अछि आ ओकर फेर टका रुपैआ होइत अछि तऽ ओहिसँ ओ अपन घरके चलबैत अछि। तऽ ओ कल्पना करऽ लागैत अछि कि बढ़िआँ फसल होइत तऽ घरमे तऽ खुशहाली खुशहाली स्वर्ग बनि जायत। यानी एहि दुआरे कहैत अछि कि लोग आशाक मचकी पर झूलत लोग आ कल्पनाक स्वर्गमे भूलत लोग, यानी लोग आशा मनमे लऽ के नव नव आशा लऽ के लोग एकदम खुश भऽ रहल अछि आ कल्पनाक स्वर्गमे भूलऽ लागैत अछि, एकदम कल्पना करि करि कि हमर जीवन की भऽ जायत, आब तऽ स्वर्ग भऽ जायत, आब सब प्रकारके खुशी सब प्रकारके खुशहाली हमरा सबके जीवनमे आबि जायत। तऽ अहाँ सब चैप्टर अगर समझि गेलहुँ तऽ वीडियोके लाइक करू, कमेंट करके बताउ कि की समझमे अबैत अछि की नहि अबैत अछि, आ शेयर सेहो कऽ दियौ, यानी शेयर कऽ देबै तऽ दोसरोके किछु जानकारी भऽ जेतै। आ सबसँ मेन बात ई कहब जे अहाँ सब चैनलके सब्सक्राइब करू, कियाकि सब्सक्राइब करबै तऽ जतेक वीडियो हमसब अपलोड करै छी तऽ ओ अहाँ तक पहिले पहुँचत, आ पहिले पहुँचत तऽ अहाँ आरामसँ घर बैठल अहाँ आरामसँ पढ़ि सकै छी। हम मिलै छी नेक्स्ट वीडियोमे अगला चैप्टर लऽ के। धन्यवाद।